Hello everyone, good morning. I hope you are fine. Today we are starting with some problems related to our motion chapter. In last class we discussed there, that is average speed and average velocity, how we can find there during the same distance will be there and different distance. Today we will discuss there, if their time will be remain same, then how you can find their average velocity and average speed. Okay, so in last class we discussed average speed, how we can find average speed, that is total distance by the total distance by the total time, then it will be average speed. If any object will be there, travel from here to there, that is initial point, this one our final point, then initially taking the same distance from here to there, s distance. Now next again same path travel by during this one, same like this one we are dividing, then t1 time is there, then t2 time is there, t3 time is there during this one, s1 s2 s3. Clear? So here you want to find out average speed, then how you can find total distance, total how we can write there from there to there, s1 plus s2 plus s3, then divide by total time taken during this one travel. So here total time, how we can write there, t1 plus t2 plus t3. So write here t1, t2 and t3. This one will be average speed if their total same distance will be travel. Okay, हमने क्वेश्चन किए थे कि अगर कोई भी व्हीकल है, कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ तक क्या है ट्रेवल कर रहा है, तो इस ट्रेवल इस पाथ को हम टू इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड कर रहे हैं, तो एवरेज स्पीड को एवरेज फॉर्मूला कैसे अप्लाई कर सकते हैं. सो एनी कार इज मूविंग फ्रॉम हियर टू देयर. ओके, same distance, same half part of this one, then here s let we are taking, next also will be same s also, means you can write there s1 equal to your s2, that is equal to s. This one half part travel during this one, then with velocity something, that is v1 we are taking. This one next half velocity will be v2. So during this one average speed we can write there average speed we can write their total distance, total we can write their s1 plus s2 divided by your v1 plus t1 plus t2. Okay, so s1 for the same path half divide कर रहे हैं same equal part में, so here we can write there 2s, because s1 s2 both we are writing there equal to s. So write here 2n. अब देखो इधर time given नहीं है, but how we can find time from here to there, that is distance given, velocity given. So as we know that relation between them, velocity equal to your distance by the time, so time we can write there s by v, distance displacement by the velocity. So time during this one first half we can write there s by v1, for the next half time will be equal to s by v2. Now t1 t2 as we are putting here, then s by v1 plus s by v2, like this one we can write. Now as we will solve this one, then here after the solution, then s you can take common, then s to s cancel out from here, then left here 2v1 v2 divided by v1 plus v2. Okay, this is the average speed, but condition is there, this one formula direct we can use if we are dividing this one distance in equal ratio. अगर ये रेशियो क्या है इक्वल रहेगा तब ही हम इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज we can't apply, then we will apply there this one relation. Okay, कि हमने स्टार्टिंग से इसको सोल्व करना पड़ेगा, separate distance we have to use with different time, then put here, then average velocity there, and direct you can put this one if your same ratio of this path is coming given in your question, then we can direct use this one. Next we are, if your question is there, an object moving with 2 meters per second for first half,
then next half traveled by any object with 4 meter per second. Then find average till initial to destination into two part. दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है कि दो आउट ऑफ दिस कंप्लीट पाथ फर्स्ट जो सेम पार्ट है वो क्या है, वेलोसिटी, इस वेलोसिटी के साथ व्हीकल मूव कर रहा है. ओके, मूविंग part equal. So here let here path is s1, then this one a to b travel with 2 meter per second. We can write there v1 equal to 2 meter per second given in our question. For this one next half, next same half distance will be travel with some velocity that is given 4 meter per second. Clear? So as given in our question के अंदर जो given है वो क्या है आपका, so s1 equal to our s2, distance same है, so this one distance we can write there, another one that is s we can write. So for the same distance we can write here, for same ratio of distance, then direct I told you that we can apply there average speed, average velocity. We can write there 2v1 v2 divide by v1 plus v2. एक मेथड तो अभी बताया डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं टोटल डिस्टेंस बाय द टोटल टाइम. डिस्टेंस आपको गिवन है इक्वल ss, ओके, डिवाइड बाय टोटल टाइम. टाइम अगर गिवन नहीं है देन वी कैन फाइंड देयर वेलोसिटी, velocity equal to displacement by time. So time is not given, then we can write there t1 equal to distance by time, that is equal to velocity. So your distance by velocity we can write there equal to time. So t1 we can write there s1 by v1 and t2 we can find there s2 by v2. Like this one we can find there t1 t2, then total distance by the total time, use this one, then we can solve. जैसे इसको ड्राइव करते तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला क्या मिलता है, ये वाला मिलता है. So that's why we can use direct this one formula also. In our question given your velocity, initial v1 आपको given है v2 and final आपको given है v2 4 meter per second. So using this one formula we can write there v1 equal to 2 meter per second, v2 equal to 4 meter per second, divide by v1 plus v2, then we can write there 2 plus 4. So here as we will solve this one, then we can write there 2 into 2 4, 4 4 16, then divide by your 6, then this one will become meter per second average velocity during this path. I hope you understood how we can solve this one question. So next question we are trying there for the same time. Okay, now next question, an object, अगर आपका टाइम क्या सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, डिस्टेंस इज गिवन इन अ डिफरेंट रेशियो बट टाइम इज गिवन इन अ सेम रेशियो. सो हाउ वी कैन फाइंड दिस वन, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल फॉर फर्स्ट 3 seconds with 5 meter per second. Okay, object travel for first 3 seconds with 5 meter per second, and next 3 seconds travel with 10 meter per second. Then find average speed. So how we can find this one average speed? Again we are applying their average speed. We can write there total distance by total time. देखो अब लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर तो क्या गिवन था, डिस्टेंस गिवन था, टाइम इज नॉट गिवन, बट इन दिस गिवन अपोजिट इज देयर, टाइम गिवन है आपको, डिस्टेंस गिवन नहीं है. ओके, यहाँ पे क्या गिवन है, टाइम गिवन है इन दिस क्वेश्चन सेम टाइम, बट डिस्टेंस इज नॉट गिवन, एंड इन लास्ट क्वेश्चन डिस्टेंस इज गिवन, टाइम इज नॉट गिवन. ओके, तो उसके अंदर हमने क्या निकाला था, टाइम फाइंड किया था, देन पुट हियर देन एवरेज स्पीड. इसके अंदर आपको क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, टाइम गिवन. सो हाउ वी कैन फाइंड, लेट हियर इनिशियली बॉडी इज हियर, दैट व्हीकल इज हियर एंड दैट इज डेस्टिनेशन, लास्ट पॉइंट ऑफ दिस व्हीकल इज दिस वन. तो ये कह रहा है कि इनिशियली फर्स्ट 3 सेकंड, 3 सेकंड के लिए क्या चल रहा है, वो
फर्स्ट 3 सेकंड के लिए उसकी वेलोसिटी क्या है 5 मीटर पर सेकंड. देन v1 वी कैन राइट देयर v1 इक्वल टू योर 5 मीटर पर सेकंड. Clear? Then after some time, then next 3 second travel with a speed that is your 10 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट टाइम के लिए नेक्स्ट 3 सेकेंड के लिए उसकी स्पीड में चेंज हो रहा है, और कितना चेंज हो रहा है 10 मीटर पर सेकेंड के साथ. ओके, 10 मीटर पर सेकेंड. सो v2 वी कैन राइट देयर 10 मीटर पर सेकेंड. दिस वन गिवन. अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट क्या है, हमने लास्ट में क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला यूज किया था एवरेज वेलोसिटी के लिए, 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2. अब इसके अंदर हम ये यूज नहीं कर सकते. क्यों यूज नहीं कर सकते? इसके लिए मैंने कंडीशन बताई थी बेटा. दिस वन फॉर्मूला तभी यूज कर सकते हैं जब हम रेशियो डिस्टेंस को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, बट डिस्टेंस तो यहाँ गिवन ही नहीं है. सो हाउ वी कैन फाइंड दिस वन रिलेशन? सो टोटल डिस्टेंस वी कैन राइट फ्रॉम हियर टू देयर. देन लेट हियर s1 and next will be travel to the s2. Okay, so writing there to average speed we can write there total distance there s1 plus s2 we can write there total time during this one t1 plus t2 we can write there. क्लियर? अब S1 S2 गिवन ही नहीं है तो कैसे निकालना पड़ेगा? S1 वी कैन राइट देयर बाय यूजिंग दिस वन फॉर्मूला V इक्वल टू S बाई T. तो यहां से क्या है S निकालेंगे S1 इक्वल टू V1 T. अब देखो दोनों केस में क्या है हमारे पास T1 इक्वल टू T1. इसके इस कंडीशन में क्या है टाइम इक्वल है. ओके, तो इक्वल टाइम के लिए हम क्या पुट कर सकते हैं? दिस वन इक्वल टू आवर T. T equal to T1 equal to T2 equal to T. Okay, so S1 by using this one relation S1 we can write there V1 into T time. Okay, तो V1 हमारे पास क्या given है 5 मीटर पर सेकेंड into time is there. Then S1 equal to 5T. Now next your S2. S2 we can write there V2 into T. V2 into T. Okay, V2 equal to our 10. And t is there as it is we can write there. बेटा वैल्यू भी पुट कर सकते हो, डायरेक्ट भी पुट सकते हो, बिकॉज इट विल बी कैंसल आउट व्हेन यू विल पुट इन रेशियो. इस रेशियो में अगर इसकी वैल्यू पुट करोगे तो t से t कैंसिल हो जाएगा. इफ वैल्यू इज गिवन देयर देन यू कैन पुट वैल्यू आल्सो, अदरवाइज you can keep as it is. So S1 we can write there 5t plus S2. S2 is there 10t. Here 10t we can write there. T1 plus T2. Now here T1 plus T2, T1 equal to T2, both are same time, so both we can write equal to T. दोनों को हम एक T लेटर के इक्वल पुट कर सकते हैं. So here T plus T we can write. अब इसको सोल्व करेंगे. सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? Here this one 15T 5T plus 10T 15 divide by your 2T. T to T cancel out, then it will become out 15 by 2 meter per second. I hope understood you difference between these two questions. In first case there same ratio of the distance, in next question same ratio of the time. Okay, same as we are driving this one. देखो अब तो हमने क्या किया था, डायरेक्ट किया था, टोटल डिस्टेंस निकाला, टोटल टाइम निकाला, then we are putting in this one. तो डायरेक्ट फॉर्मूला like this one we also can drive for this one same time also. So let us see how we can drive it for average speed. किसके लिए निकाल रहे हैं हम? फॉर सेम रेशियो ऑफ टाइम. अगर टाइम को क्या है सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं. इफ वी आर डिवाइडिंग इनिशियली एनी ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम हियर टू देयर इनिशियल टू फाइनल, देन सेम टाइम डिवाइडिंग सेम टाइम T1 A B and C and this one here T2 time. Clear? From here to there, then we can write there V1 velocity and this one velocity is V2. यहाँ से यहाँ A से B तक जो वेलोसिटी उसने की है वो क्या है V1 है. B to C जो वेलोसिटी है उस व्हीकल की वो क्या है V2 है. क्लियर? तो यहाँ से T1 इक्वल टू T2. तो फॉर दिस वन देन here we can write their average speed. Average speed we can write there total displacement by the total time. By the total time.
So total displacement we can write here, displacement from here to there, then displacement let we are taking there, let from A to B, displacement will be equal to, किसके इक्वल आएगी, S1 we can write there V1 into T1. Okay, condition क्या given है, for the same ratio of the time means that is T1 equal to T2 equal to T, दोनों टाइम क्या है, सेम है. ओके जितना भी पाथ है वो सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब क्या है कि ए से बी तक जो बॉडी ट्रेवल कर रही है वो 2 सेकंड ले रही है. नेक्स्ट भी क्या है, बी टू सी जो है पॉइंट वो भी क्या ले रही है, 2 सेकंड ले रही है. नेक्स्ट भी क्या है, 2 सेकंड ले रही है. तो मींस जो टोटल पाथ है उसको इक्वल रेशियो के टाइम में डिवाइड कर रखा है. सो ड्यूरिंग दिस वन देन S1 वी कैन राइट लाइक दिस वन. सो फ्रॉम B to C displacement we can write here, displacement will be equal to S2 equal to V2 into T2. इस तरीके से लिख सकते हैं. अब यहां से टाइम इक्वल है तो इक्वल टाइम के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, V1T एंड दिस वन वी कैन राइट देयर V2T. S1 S2 आ गए. तो इसी को हम यूज करेंगे एवरेज निकालने के लिए. तो फॉर फाइंड आउट एवरेज स्पीड के लिए we are applying their total displacement by total time from here to there, that is total displacement is S1, for next half that is S2, then divide by T1 plus T2. क्लियर. तो यहाँ पे S1 और S2 की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी, S1 इक्वल टू एवरेज स्पीड इक्वल टू S1 प्लस S2 डिवाइड बाई T1 प्लस T2. S1 we can write here, S1 equal to V1T and S2 equal to V2T. V1T plus V2T divide by T1 plus T2. Both are equal. If equal, then we can write there T plus T. Then taking common from here T, then after taken common, then here left V1 plus V2 divide by our 2T. Now see here ratio. From this one ratio then we can cancel out T to T, then here left V1 V2 by 2. This came out our average speed. अब देखो इसके अंदर क्या है, अगर टाइम सेम है तो हम क्या है किस तरीके से निकाल रहे हैं, V1 plus V2 like this one. If more than 2 will be there then we can write there V1 plus V2. If there n number of the velocity is there, if n number of velocity is there, so this one we can write there V1 plus V2. एवरेज स्पीड को हम क्या लिख सकते हैं, V1 plus V1 V2 up to our nth divide by number of the terms. Okay, so in last question we discussed there, here we discuss there बेटा हमने फाइंड किया था इस रेशियो को यूज करते हुए. तो डायरेक्ट अगर टाइम सेम है तो डायरेक्ट हम जो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं वो क्या यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट वी कैन यूज दिस वन. फॉर दिस वन केस एवरेज स्पीड विल बी, वी कैन राइट लाइक दिस वन V1 प्लस V2 डिवाइड बाई आवर 2. दो में हमने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रखा है. फॉर दिस वन 3 सेकंड, फॉर नेक्स्ट 3 सेकंड, देन वी आर डिवाइडिंग लाइक दिस वन. सो सेम अगर डिवीजन हो तो हम डायरेक्ट इसकी बजाय क्या है, ये भी हम तरीका अप्लाई कर सकते हैं इफ यू वांट टू सोल्व एनी न्यूमेरिकल ऑफ द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. सो V1 V2 हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, 5 मीटर प्लस नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है, 10 मीटर डिवाइड बाई 2, देन इट विल बी कमिंग हियर 15 by 2 मीटर पर सेकंड. सी दिस वन आंसर एंड दिस आंसर कमिंग हियर सेम ओनली. Clear? I hope you understood beta. I told you of average speed and average speed two method, then any one method you can apply, but keep in mind this one formula. This is the main formula for I find out this average total displacement by the total time. ये वाला जो रिलेशन आया है and this one relation ये हमने ड्राइव किया है इनको पुट करते हुए इनकी वैल्यू को. ओके, तो ये वाला रिलेशन है आपको लर्न करना है जब हमारा जो रेशियो डिस्टेंस को सेम गिवन है. अगर डिफरेंट गिवन है देन वी कांट यूज. डिफरेंट के लिए हमें इस तरीके से सोल्व करना पड़ेगा.
Clear? For example, next, any object moving with 2 meter per second for 5 meter distance, 4 meter per second for 8 meter distance, and 12 meter per second with 14 meter. Okay, then find average speed during traveling of this object. So how we can find this one? अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखेंगे क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड के साथ। लेट हियर दिस वन पॉइंट इज ए एंड दिस वन पॉइंट इज बी। तो ये कह रहा है कि 2 मीटर पर सेकंड के साथ ट्रैवल कर रहा है 5 मीटर डिस्टेंस। 5 meter distance, let we are taking this one C point, this one 5 meter distance travel, S1 we can write there 5 meter, travel with this one speed, then V1 we can write there 2 meter per second. Okay, now C to D we can write there S2, S2 we can write there 8 meter distance with this speed, then here S2 we can write there 8 meter, then this one speed is given V2 equal to our 4 meter per second. नेक्स्ट कह रहा है उसके बाद 12 मीटर पर सेकेंड ट्रेवल विद 14 मीटर। नेक्स्ट 14 मीटर मीन्स S3 वी कैन राइट देयर 14 मीटर डिस्टेंस किस स्पीड के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड के साथ। इस केस के अंदर कह रहा है फाइंड दी एवरेज वेलोसिटी। ओके, सो एवरेज स्पीड हाउ, अगेन वी कैन फाइंड दिस वन S1 प्लस S2 plus S3 divide by T1 plus T2 plus T3. Clear? As given in our question, we are putting value. अब देखो इसके अंदर हम वो फॉर्मूले अप्लाई नहीं कर सकते 2V1 V2 like this one divide by V1 plus V2, ना हम अप्लाई कर सकते V1 plus V2 plus V3 divide by 3, ना हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि क्या है यहाँ पे डिफरेंट आपका क्या है, डिफरेंट डिस्टेंस है, डिफरेंट वेलोसिटी है। ओके, टाइम भी गिवन नहीं है, तो अगर ये डिफरेंट है तो आपका टाइम भी क्या निकलेगा, डिफरेंट निकलेगा, तो वो फॉर्मूले हम अप्लाई नहीं कर सकते। इस केस के लिए हमें क्या है, इसी फॉर्मूले के थ्रू हमें चलना पड़ेगा। सो डिस्टेंस आपको गिवन है, टाइम इज नॉट गिवन। फॉर फाइंड आउट द टाइम, देन हाउ वी कैन फाइंड टाइम? सो यूजिंग दिस वन रिलेशन वेलोसिटी इक्वल टू आवर V1 इक्वल टू S1 बाई T1। तो यहाँ से T1 निकालेंगे तो T1 क्या आएगा, S1 बाई V1। S1 आपको गिवन है 5, देन V1 इज इक्वल टू 2, 5 बाई 2 सेकेंड। T1 हमारे पास ही आ गया। सेम T2 निकालेंगे इस केस के लिए, S2 बाई V2, S2 इक्वल टू 8 एंड V2 इक्वल टू 4। Came this one? So here we can write this one 2 4 ja 8, 2 2 ja, then here we can write there T2 equal to our 2 second. Now next here T3 we can write there S3 by V3, S3 equal to 14 divide by V3 12, then when we will solve this one, then here we can write there 7 by 6 second. Clear? इसके बाद क्या आएगा हमारे पास, now we will put value of these terms। अब वैल्यू पुट करेंगे इनकी, S1 S2 S3, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 5 मीटर प्लस 8 प्लस 14। वी आर पुटिंग S1 S2 S1 S2 S3 तीनों की वैल्यू पुट कर दी। T1 T2 T3, T1 इक्वल टू योर 5 बाई 2 प्लस T2 इक्वल टू 2, देन नेक्स्ट योर T3 इक्वल टू योर 7 बाई 6। Clear? Now take this LCM,
After the LCM taken, then here we can derive this one. Average speed we can write like this one. 3, 5 plus 8, 13. Then here we can write there 4 plus 3, 7, 2. 27 will be there. Now here we are solving this one relation. Now as we will take LCM, 6 will be there. 2, 3 ja 6, then 3, 5, 15, plus 1, 6, 12, plus 6, 1, 7. ओके, तो सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ गया इसको 5 to 7, 7, 7, 14, 1, 1, 2, 3, 34 by 6. Now here you can write this 76 by 34. This one meter per second. This one will become average speed during this one case. तो हमारा आज का टॉपिक क्या था average speed. How we can find their different question we discussed there. So solve this question. Try to do yourself. Then thank you for watching today our video.